திருச்சிற்றம்பலம். குற்றாயினவாறு விளக்ககிளி கொடுமை பல செய்தன நானறியேன். ஏற்றாயடிக்கே இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும் தோற்றாதன் வயிற்றம் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கி கிட ஆற்றேனடியேன் அதிகை கிடில விரட்டான துறை அம்மானே விரட்டான துறை அம்மானே. திருச்சிற்றம்பலம். தேவதேவதமே தேவதா சார்வமே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய திராவிட வேத பிரிய திராவிட வேத திருப்புராணம் அவதாரய. திருச்சிற்றம்பலம். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணிய அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். திருச்சிற்றம்பலம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதே ஹர ஹர மகாதேவ ஹர ஹர நம பார்வதி பதே ஹர ஹர மகாதேவ. தென்னார் சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர் வாவா போற்றி இன்பமே சூழ எல்லோரும் வாழ்க சித்தமே சிவசிதம்பரம் சிவசிதம்பரம் திருச்சிற்றம்பலம் நிலை பெற்ற பொன்னம்பலம் நீரூடி வாழ. ஹரோஹர. ஓம் பூத்பூஸ்வஹம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरोरसे सावधो मा पूज्यो चिरसंसम्भ्रमभूत्भूस्वरो मृत्युमृत्युं विष्णुष्यामि देवसोतप्रस्वामृतमस्तु अमृत उपस्तरिणं नित्यों प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा. ஓம் நீராஜனம் தர்शयामि நமः. ஹரோஹர. ஓம் ராஜாதி ராஜாய பிரசய சாயினே நமோ வயமயே சவனாய குர்மஹே சமே காமான் காம காமாயமயம் காமேஷு சனஜாத குபேராய வைஷவனாய மகாராஜாய நமः. நீராஜனம் தர்शयामि நமः. Now, Kalasha Udvasanam. Can you please stop? Ask them to stop the milk abhishekam. Whoever remaining, let them stay there. Let them be given a conch. Done? So, Abhishekam is done. Tiruchittambaram. Now, Kalasha Udvasanam. There are 30 Dakshinavarti Shankam. The ladies who have come for the first time to the temple, please go, not the sponsors. Please make a line inside sanctum. You will be given one Vanampari Shankam for Abhishekam. Do Abhishekam to only to the Devi, followed by the first time ladies. Now the rest of the ladies, especially elders, please make a line behind them. The rest of the people can stand. Rest all, please join us for parikramam. We are going to go outside for parikramam. Please do not stay inside the temple. Thank you very much. 30, yeah. There are 30 Dakshinavati Shankam, and each will be given one of each. First come, first served,
starting from first time ladies. Come. Om Trichintambaram Namah Shivaya Balga Nadantal Balga இவை பொழுதும் என்னெஞ்சில் Nindantal Balga கோகை ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ வேதம் கெடுத்தாண்ட பெண்கள் அடிவல்க பிறப்பறக்கும் The bell here, Amma. Again, bell. வெல்க பிறத்தார்க்கு செய்யோந்தன் பூங்கடல்கள் ஈசனடி போற்றி அது ஒன்றும் கரெக்ட் ஈசனடி போற்றி போற்றி எந்த எடி போற்றி தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி லெஃப்ட் ஹேண்ட் நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பதற்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெருந்துரைனம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் பின்னுக்கு வாங்க. அருளும் மலை போற்றி சிவனவனின் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாளே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ கையில இங்க support. சிவபுராணம் தன்னை புல்லாகி பூடாகி புழுமாகி மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாது நின்ற தாவர சங்கமத்துள் சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேனும் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டுன்று வேடுக்கே உய்யேன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விடைப்பாக இருங்கள். ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் யமான நான் விமலா பொய்யாயின எல்லாம் போயகள வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விழுகின்ற மெச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதே இல்லாதே இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்கம் அளவுறுதி இல்லாய் அனைத்துலகம் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை பூவிப்பாய் நின்றொழும்பில் நாட்டத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே மாற்ற மனங்களிய நின்ற மறையோனே கறந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தாள் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர் கிளேத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோள் போர்த்தெங்கும் பொழுவலுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயில் குடிலை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாயி கசிந்து உள்ளுருவும் கலந்தானிலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள்கலர்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடர்ந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றருக்கு
பாரிக்கும் ஆரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆரா அமுதே அளவிலா பொம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராயுருக்கியன் ஆறுயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாம் அல்லையுமாம் சோதியனே துள்ளுருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாய் அல்லானே ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வாய் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்குமென் காவலனே தான் பெரிய பேரொடியே ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாய் மிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரொளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் ஒவ்வொரு வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பி உட்கிடப்ப ஆற்றே நம்மையா அரணே ஓவன்றென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கட்டு மெய்யானார் மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிற விசாராமே கள்ள புலக்குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே நல்லுருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையில் கூத்தனே சொல்லிய பாட்டு பொருளுகந்து சொல்லுவானே ஓவன்புறக்கு சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவா செல்வ சிவபுரத்தின் உள்ளா சிவனடிக்கு பல்லோரும் தொல்லையிரும் பிறவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் அறுத்து ஆனந்தமாக்கியது எல்லை மறுவானொலியளிக்கும் பாதபூரெங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் திருச்சிற்றம்பலம். हरोहर गणनायक पित कुमार जनका साम शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सांब शिव गजमुख संस्तुत पंचमुखान्वित सदा दहितानंग उमामुख भृंग परिवृत प्रमथा सांब शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सांब शिव पन्नग विष्ठित काल कंधरा प्रलय नाट्य प्रिय सदा शिवा कनकाटंक धारिणी रमण शिव कामि प्रिय सांब शिव 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 सदा शिव 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 सांब शिव क्षीरसागरोद्भूत चितकंधर सदा शिवा क्षीरसागरोद्भूत कन्यका पद्म प्रिय शिव 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 शिव
दक्षहर दक्षोद्धरक रूपा सदा प्रांतक जीव जीव सदा शिव गम जीव शिव जीव लील ताजू तंतरा ज्ञानंदा सजीव शिव शिव Rohara. शिव 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 सांब शिव 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 सदा शिव 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 सांब शिव 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 सदा शिव 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 सांब शिव 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 सदा शिव 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 सांब सांब शिव सदा शिव सदा शिव सांब शिव Ayya, come forward, Ayya. Come forward. Yeah, stay there. Om Prajnanam Brahmayamatma Brahmatatmasya Brahmaswam Sashivasrohamam Sasakapram Hasakshamalaryam Savam Sahakshamanam Sahu Swarupanirupanahetave Suguru Srijanambika Sameta Sri Chaitanyananda Sri Krishna Padukam Pujam Trapiyam Namaha. रक्तज्वालनिष्ठादरं स्यमलं रक्ताङ्गतेजोमयं धृत्वा शूलपाशकपाडमृकं लोकस्य रक्षाकरं निर्वाणं सुनवानं त्रिनमानन्दकोलाहलं वन्दे सर्वभूतपिशाचनादरं क्षेत्रस्य पालं शिवं सुनधुजाय विद्महे त्रिशूलस्ताय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
Rohar. Come. Come here. शंभो महादेव देव, शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, पालावनं हृत्किरीटं फालनेत्राक्षिषा दग्धपञ्चेषु कीटं शूलाहतारातिकूटं शुद्धमध्येन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, अंगे विराजभुजङ्गम् अभ्यङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाटीपुरङ्गं सिद्धसंसेविताङ्घ्रिं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, नित्यं चिदानन्दरूपं निःस्फुटाशेषलोकेश वैरिप्रतापम् आत्मस्वराजेन्द्र चापं पृथ्वीवासं सन्मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, Please sit down. All of you, please sit down. भगवन्तं सुरेशं कोटि सूर्य प्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, मन्दारभूतेरुदारं मन्दराजेन्द्रसारं महागौर्यदूरं सिन्धूरदूरप्रचारं सिन्धुराजातिधीरं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, ओम मकरंदकरे प्रसाद में सच्चरितस्पृणामते अग्रस्तामृताकारे शुद्धज्ञानकरे परे मदवन्दे अस्मिन्नस्तुनि कृण्डरूपिणी ऐं वदवदवाग्वादे ऐं क्लीं 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 महाचोदं कुरु महालक्ष्मी श्री परमस्वामिनी ऊर्ध्वश्विनी प्रवाहिनी सोमसूर्याग्निवीक्षिणी परमागाकारे आगच्छ शिवपादं प्रतिगण्ड ओम फट् स्वाहा, पुण्यं जो मे स्वाहा, पापं जो मे स्वाहा, कृतं जो मे स्वाहा, कृतं जो मे स्वाहा, संकल्पं जो मे स्वाहा, जो मे स्वाहा, धर्मं जो मे स्वाहा, धर्मं जो मे स्वाहा, कैलाहरं भजकलहरं सकलहरं अधर्मं जो मे वज्र इतः पूर्वप्राण बुद्धिदेव कर्मकारतः दर्शनस्यावस्था मनसा वाचा कर्मणाभ्यां तद्भ्यां देवशिष्णमय्यात्कृतं नेतृत्वं स्मृतं सर्वं ब्रह्माण्डं स्वाहा, आद्रं ज्वलति ज्योतिरस्मि ज्योतिरस्मि योऽहमस्मि ब्रह्मास्मि अहमस्मि ब्रह्मास्मि अहमेवं मां जो मे स्वाहा, ॐ प्रज्ञानं ब्रह्मैवात्मा ब्रह्मतत्त्वमसि ब्रह्मास्मि, ओम हंस शिव सोहम हंस सकफ्रहिम सक्षमलवरिम सोम सहक्षमलरिम सहु स्वरूप निरूपण हेतवे सगुरुवे ज्ञानाम्बिका समेत श्री चैतन्यानंद श्री गुरु श्रीपादुकां पूजयन्त्रभ्ये नमः। ओम ह्रीं द्रौं जुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा। ओम ह्रीं द्रौं जुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा। ओम ह्रीं द्रौं जुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा। ओम ह्रीं द्रौं जुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा।
ॐ ह्रीं ह्रौं जुषः अमृते अमृतो भवे अमृते श्री अमृतवश्री अमृतं स्रावे श्रावे स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रौं जुषः अमृते अमृतोद्भवे अमृते श्री अमृतवश्री अमृतं स्रावे स्वावे स्वाहा कल्याणाय पूर्णचन्द्रवदना प्राणेश्वरानन्दिने पूर्णतरां परेश पूर्णामृतास्वादिनी सम्पूर्णां परमोत्तमामृतकलां विद्यापतिं भारती श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरी एकारादिसमस्तवर्णविविधा कारैकचिद्रूपिणी चैतन्यात्मकचक्रराजनिलया चक्रान्तसञ्चारिणी भावाभाविभाविनी भवत्रां सद्भक्तिचिन्तामणि श्रीचक्रप्रियतर्पणकरा श्रीराजराजेश्वरी ईशादृष्टपरयोगविदितां पश्यन्ति अनुमध्यमां विलसिनी शिखरीरूपिणी अनाथविचारिणी वरदां नित्यां त्रिबीजात्मिकां श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरां श्रीराजराजेश्वरी लक्षालक्षनिरुपमां रुद्रमालाधरां रक्षांशकर्तां धीरां भद्रां वरदां भगवतीं भद्रेश्वरीं त्रिणीं श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणं श्रीराजराजेश्वरी हरोहर ह्रीजागदनादु बिन्दुभरिता ॐ सुप्नपालितां धीनो नतां घोनितां हुंकाब्दजानिरतां सारविचाराचरितां नाशराजरा सर्वेषां नादिनी नादिनी योग प्रेमति पूर्णतां सर्वान्तर्गतशालिनीं स्वतनुं श्रीपिनी श्रीचक्रपरां राजर या दिव्या शिवकेशव आदिजननी ह्रींकाराशित शङ्कर योगपीठेश्वरी माङ्गल्यायुधपङ्कजाभयवां माङ्गल्यसिद्धिप्रदां दारुणेन विशेषतां सुमः लावण्यसंशोभितां श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरां श्रीराजराजेश्वरीं सर्वेषाङ्गविकरुणा सत्नादिनीं नादिनीं संयोगप्रियरूपिणीं प्रेवतीं प्रीतां प्रतापोनतां सर्वान्तर्गतीं श्रुतनुं
Sandeepin Deepine Krapriya Bindu Tarpana Param Sri Rajarajeswari Om Gurubhyo Namaha Harihi Om. Rohara. Ya Divya Shiva Keshava Adiganam Avaitanamosini Ya Brahma Aditya Kanta Jagata Naika Sandhayini Kanari Ya Chittapani Bhapaya Rajeshwari Sri Rajarajeswari Sponsors, only sponsors.
let us all join the Yajnashala. I'll come. Please. I'm coming there. I'm coming there to each one of you. Come. One second. Excuse me. All please go in Yajnashala. We'll be chanting Lalita Sahasranamam. Everybody, please go and sit in Yajnashala. Everyone, please. शुक्लांबरधरं विष्णुं द्विजवदनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यश्चिद्विरदवक्त्राद्यः पारिशुद्धाः परिच्युतं विघ्नं सततं विश्वक्षेणं समाश्रयेत् विघ्नध्वान्तनिवारणकरणिः विघ्नाटवीहव्यवात् विघ्नव्याळुकर्मत्तगरुडो विघ्नेपपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनकरी विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नौ भोगधनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Kindly head back into Yajnashala, and once in Yajnashala, kindly resist from talking, pick up a place and be seated. Puja is far from over. We are going to do Lalita Sahasranama Parayanam in a few minutes. That's okay, yeah. Shiva. Sit there, otherwise we'll be caught. I'll come to each one of you. All of you come and sit in an orderly manner. Everybody please come and sit here. Everybody. Please do not talk. Excuse me, Amma. Ayya. If you are talking, you have to go outside. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Everybody sit down. Sit down, please sit down. Please go and sit down. निधये सर्वविद्यानां भुजगे भवदोजिनां गुरवे सर्वलोकानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः. Please sit down. Everyone, please sit down. The right person. I don't know. Suddenly. Please sit down. Here. Om विश्वंदर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्विवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. Devotees, this is not the time for any kind of conversations. Kindly pick up a place and be seated. Okay? As fast as possible, try to pick up a place and be seated. No standing around or talking around. Thank you very much.
विश्वन्दर्पण दृश्यमाननगदीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कर्मार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसाच्यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्सुमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिश्चपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पुत्रपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भाश्च नलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतान् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये That's okay, Tayi. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः significantly come down. Sri Vidyam परिपूर्णमे ऋचिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादि समस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसार्दवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे ककारः पातु शीर्षं मे एकारः पातु फालकम् ईकारश्चक्षुषी पातु श्रोत्रे रक्षेत्लकारकः ह्रीङ्कारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसंज्ञकः हकारः पातु कण्ठं मे सकारः स्कन्ददेशकं
ककारो हृदयं पातु हकारो जठरं तथा लकारो नाभिगेशन्तु ह्रीङ्कारः पातु गुह्यकम् कामकूटः सदा पातु कटिदेशं ममैवतु सकारः पातु चोरुमे ककारः पातु जानुनी लकारः पातु जङ्घे मे ह्रीङ्कारः पातु गोभकौ शक्तिकूटं सदा पातु पादौ रक्षतु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्य श्री ॐ दिव्यललिता स्तोत्रमाला अस्य श्री ललिता दिव्यरहस्य सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवताश्रये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखवृत्ते श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवताय नमः हृदयकमले ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौः कीलकम् मम श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी वरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्लीं तर्जिनीभ्यां नमः सौः मध्यमाभ्यां नमः ऐं अनामिकाभ्यां नमः क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ऐं हृदयाय नमः क्लीं शिरसे स्वाहा सौः शिखायै वजते ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषधे सौः वस्त्राय भटे भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्बन्धः ध्यानम् सिन्धूरारुणविग्रहां प्रणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां जगमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नखरस्तरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललिताम्बिकाय नमः श्रीं श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायिका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्युज गुरुविन्दमनिश्येयी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजितलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तिरस्कारिणा सा भरणभासुरा कदम्बमञ्जरीगुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादृश्य परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीञक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीलिकामूलसमाकर्षद्विरन्तरा विदल्लात्माधुर्यविर्भत्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनागलसादृश्यजुभुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिभणस्तनी नाभ्यालतालगोमायता फलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारतरन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारण्यरचना दामभूषिता कामे यज्ञाददौ भाग्यमाद्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपरीक्षिप्तस्मरतु नाभजङ्घिका
गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजैष्णुप्रपदान्विता नकदीनिसञ्चन्दनमज्जनतमो गुणः परद्वयप्रभाजालपरासरोरुह सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुज मराळीमन्दगमना महालावण्यशेवजिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्तः शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्थः श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिग्लान्तस्थः पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्थागदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घादस्तूयमानात्मवैभव भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता ये चक्रधारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्रधारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिकाक्षिप्तवन्यप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्थिता भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बाभिरिषङ्गवधदोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वर महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता बन्धासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपदास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभव हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्वैभूतैकस्वरूपमुपपङ्कज कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिगूढैकतापन्नगत्यदो भागदादिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा कुलामृदैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधा साराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिः गच्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनीभिततन्तुतनीयजी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्याभयापः शाम्भवी शारदा राज्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभादना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमधनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निःसुरा नीरजिगुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रगुरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला
महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्टिपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणदेविता मनोविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचंद्रकलाधरा चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमुप्रभा पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यात्रुध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्थाविवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवदावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रीमन्दसिन्धूरीरपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणी रस्यारणकिङ्किणिमेखला रमा रागेन्दुवदना रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसज्ञी रामा रमलम्पटा काम्या कामकलारूपागरम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती गन्धाकरणा रससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविक्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलदिगा भुजपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपः चितस्तत्पदलक्ष्याद्धाजिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः पराप्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गारसम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओद्यानपीठनया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयायक्रमाराध्या रहस्तर्पणदर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यकृन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेशनयनकुमुदा ह्लादकौमुदी भक्तहाद्यतमोभेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया सुप्रकाशा मनो वाचामगोचरा चिच्चक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिसन्ध्यादिजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निश्चीममहिमा नित्ययौवना मदचारिणी मदघूर्णगरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुलकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतध्वतिः
शांति स्वस्ति मदीगांतरनंदिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती तृणयना लोला क्षीकामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलया चलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रो शोभना सुनायिका कालकंठी कांतिमदीक्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्थाविवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गाजिपहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृताजि महाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनया श्यामा भावनद्वया दंश्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बः स्वरूपिणी मेधोनिष्ठामसुप्रीता बन्दिन्यादिसमन्विता लज्जन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अङ्कुशाजिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जिनलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रामणिकलसिका हाकिनी रूपधारिणी मूलाधार सर्ववर्णोपशोभिता सर्वाजगराजुष्कसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामितर्मेधा श्रुधे स्मृतिर्नोत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमयार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्यावेदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्याजित्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायिनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्यामृणानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिनियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वी पानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीयादया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करी भूतकमला कोटिदेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा फालस्थिन्द्रधनुष्प्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायिनी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी करान्दोलनदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गोजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्ताधरा काचरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाभविनोदिनी प्रजापररमावाणी सव्यदक्षिणदेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रह क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा जगद्वन्द्या त्रिमूर्तिसततेश्वरी चक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जयत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृथा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भाववर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजकृपा राजपीठनिवेशनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी
साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकभयङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुप्तरूपिणी सर्वोपाधिनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी गुणोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लेखनी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदावसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यदूलवातूला जराध्वान्तर्विप्रभा भाग्याभ्रिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिरोधिनी शराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री तुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराढ्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारुकुसुमप्रिया वीराराढ्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा कपद्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधि काव्यकलारसज्ञा रसदेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुपरात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा विधार्चिता प्रतपित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता यत्प्रदूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवावर्णरूपिणी जन्ममृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषद्भुष्टा शान्ततीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरञ्जिता कनत्कनकदाटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराढ्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधास्तुतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञगत्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानगणनाकल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा करुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या सरस्वेरमुपापूजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यप्रदायिनी स्तोत्रप्रिया सुजमते श्रुतिसंस्कृतवैभवा मनस्विनी मानवदी महेशी मङ्गलाकृतिः
विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिजायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धरा धरसुधा धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता क्षमात्मिका बन्धुकुसुमस्पृष्ट्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुरगली सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यक्षरप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुदर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानध्येयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनगाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासादिज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्यशासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्य संवादे श्रीललितारहस्य सहस्रनामस्तोत्रकथनं सर्वं सम्पूर्णम् श्रीं ह्रीं ऐं ॐ सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगरस्तरक्तचरणां ध्यायेत् पदाम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललिताम्बिकाय नमः श्रीं ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्लीं तज्जनीभ्यां नमः सौर्मध्यमाभ्यां नमः ऐं अनामिकाभ्यां नमः क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सौर्गरदलकरपृष्ठाभ्यां नमः ऐं हृदयाय नमः क्लीं शिरसे स्वाहा सौः वषटे ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वषटे सौः अस्त्राय वटे भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्विमोदः तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। Take some more time now, approximately 20 minutes. So this is the time we share the information about upcoming events, what's going on in the temple now, and of course our cherished, everybody's cherished dream of building Rajagopuram. They all will be shared. I'll start and then CGI will continue with Rajagopuram updates. The first and foremost, how many of you have come first timers? I see a lot of people today, first timers. So, courtesy, we will ask you where you're coming from, each one of you. Boston, Toronto is not too far, it's not outsiders. Next door neighbors, right? So the next question I ask you, how long have you been here in Toronto and why you came to so long for you to come? Amma Darshans. So the unique thing about this temple, even if the next door neighbor would not know about this, it is not she doesn't want you to be here. The time may not be right for you. And when it is right and there is no stopping from you. So keep coming, please coming, everyone. So the rest of people, other devotees, so I had a lot of hands. I know you came from New Jersey. Yeah? Toronto. Anybody here? Toronto.
எங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. So Ayya would have spoken in Tamil. I think may not speak today, but normally that is the best language we could hear, especially when he speaks. Can you keep little bit quiet your conversation, Ayya? If you have a question, you can ask us. Excuse me, Ayya. Excuse me, Ayya. If you have a question, you can ask us. We'll answer you back. Have a question, Ayya? Thank you. So, right now, as you've seen, you must be seeing many children are around. How many of you come for the camp as a parents in this? That's interesting. So we have only one as a parent. Probably you should hear about the camp, I think, when we hear from our counselors or our president, we'll talk about more about the camp. This is a good opportunity for you, and this is one temple where you have the opportunity to learn. And that camp is one of the things for, especially for the children, that will happen. That's what is going on. It starting today. It will go 1 week. It's a residential camp. The children will learn almost everything about Sanatana Dharma and what happens, what the Vidhanams, our culture, especially Shaivas. This is called Shaivat Immersion Camp. It will learn everything about, of course, we say Shaivat, but everything in Sanatana Dharma. That's what he'll learn. There'll be more on, he'll talk about from Sri Jaya, he'll talk about more. Then other upcoming events coming up. Do you have upcoming events? Yeah. Keep going. Up karo. Okay, Namaskaram. Yeah, like Vilasaya was saying, we used this time to talk about upcoming events at this temple. So let me talk about a few things coming up. On 11th of August, we have Adi Amavasya. So for those who don't know, this is one of the occasions during the year where you can do Pitra Tarpanam for any paternal ancestors. So there are two occasions. Chitra Paurnami is for maternal ancestors and Adi Amavasya is for paternal. That is on your father's side. If anybody has passed away, your father or one of your father's ancestors. Of course, if you can do it on the Tithi, that is the best. But if you miss the Tithi, then this is another occasion when you can do it. Adi Amavasya. So we do it in a group fashion here. So literally maybe 40, 50, 100 people will come and we will all do it together. So that is on 11th of August. On 14th of August, we have Adi Puram, when there is going to be a Chandi Homam as well. So sponsorships for both of these events are open. If you are interested in participating, you can come to the bookstore. So those of you who are interested in doing Chandi Homam, again, very few times during the year that we do Chandi Homam here. Adipuram is one of them. That is 14th of August. Then on 21st of August is Varalakshmi Vratam. Everybody knows what Varalakshmi Vratam is. So that is happens in the evening. And I think 6 or 7 o'clock in the evening, we will announce the details. Again, the sponsorships are open if you'd like to come and participate. We basically dress up a beautiful vilak in the form of Mahalakshmi, and a lot of people, mostly ladies, but gents are equally welcome to come and sit and do puja to Varalakshmi. That is 21st of August. On September 13th, we have the Mahamandapa Puja. So Vilasaya was briefly mentioning that we are constructing a new temple, and I think the reasons are pretty obvious. If you just look around you, there is really no space here anymore. So this is just a regular Saturday in the summer. So if you can imagine a festival like
Navaratri, Shivaratri, there is people are just standing mostly outside because there is no room inside. So the new temple is going to be 3 to 4 times as large in terms of the space. Apart from that, it will have many special features. I can talk about that. But an important milestone for us is the Devi Sannidhi, where Rajarajeswari, the main Murti, will move there. That Sannidhi and the Mahamandapam in front of it. So Mahamandapam is a pillared hall. You can think of, if you've gone to a old temple like Meenakshi temple, you will see these they are kind of a mandapams with pillars on all 4 sides. So this is similar. It will have 20 granite pillars supporting this mandapam, and the groundbreaking for that is what is going to happen on September 13th. So to mark this occasion, what we are doing is we are going to have 1,000 Valamburi Shankam. You know what a Valamburi Shankam is? It's conches come in left-handed and right-handed, so depending on where, so if you can imagine, right, it's either the conch is on the left and the opening is on the right, or the conch is on the right and the opening is on the left. So this is a Valamburi or a right-handed conch. One in maybe 10,000 conches are Valamburi Shankams, right? So it's very rare. So we have 1,000 of those which are being sponsored by various devotees, and they will take these conches and put it in the foundation of the Mahamandapam. So that is the plan. Again, sponsorships are open if you'd like to be part of this. That is on September 13th. And then on 14th of September, we have Vinayaka Chaturthi. So another very big festival. This temple is a Shivalayam primarily. So all of the Shiva Kutumbam, whether it is Skanda or Mahaganapati, Devi, Shiva, and all the forms, they all have their own festivals. So 14th of September is Vinayaka Chaturthi. How many of you are already getting these announcements in email or WhatsApp? Okay, most of you are not then. So I will request you, if you want to get these announcements, you have 2 options. You can join our mailing list. So if you prefer to receive these by email, or you can join our WhatsApp community, and then you will get these announcements on WhatsApp. So I think we have a few more minutes. It's working. It's connected? Okay, I'm going to try and share something about VSI. So I think Vilasaya mentioned this is the 21st year that we are conducting Vibhuti Saivite Immersion. That is the name of, you can think of it as a camp, but it is a residential program for children, the ages of 10 to 18. And this is the 21st year. So we've been running this for a long time. And every year there is a different theme, a different saint that is the focus of that year. So this year's focus is going to be on Aurobindo and the mother from Pondicherry. So they will be the focus of this year's VSI. So just to give you an idea of what is covered in VSI, every year they publish a malar. That is like the manual for the entire program, right? And this is, I'm just sharing with you a PDF of that so that you can see what is actually covered. This is called Vibhuti Saivite Immersion. We don't call it a camp because it is really an immersive experience for the children. It is attached to a temple, right? So it's not a camp happening somewhere. So whatever the children learn, they can actually see it being practiced right here in the temple. So you can see on the TV screen here, puja and chanting is one of the topics. So there's so many pujas that happen here, but we expose children to the simplest of these pujas that they can perform every day at home.
The idea is really to inculcate a habit of nitya upasana or a nitya anushtanam, something you do at home every day. Then there are myths and stories, a saint's class, like I mentioned, Shiva Puranam, because this temple is heavily subscribed to Saiva Siddhantam and some of the Tamil temple traditions. So Shiva Puranam, devotional singing. There is a Parikramam class. So, you know, one of the things, if you attend any festival here, you will see the deity goes around the temple. And that is called Parikramam. The deity is going around in circumambulation. And there is a whole class dedicated to how to organize a parikramam, how to organize an utsavam. And then there are, of course, food and nevedyam, culture and arts. There are also sports. That's not in this manual, but that is also part of the program. So this gives you a rough idea of what is going to be covered over the next week or so. And I mean, there is so much here, maybe hard to read here, but we try to explain why do we chant? Why do we chant in Sanskrit? Why not in a different language, right? So the reasons for that, because we are a teaching temple here, we really try to go out of our way to explain things and to teach things that, you know, in a regular temple, you don't get the opportunity to ask these questions. What are the benefits of chanting, right? And what are the different aspects of chanting? When you heard Sanskrit being chanted, there is the correct pronunciation, the notes, it's not all flat, it goes up and down, like, you know, then the duration of vowels, all of that, different chanting rules. The Sanskrit alphabet is something children are introduced to, because these are the seed sounds that all of our chanting is based on, and how to produce these sounds, from which parts of the mouth. It's a beautiful manual that's been put together. What is puja? Why do we do puja? What is Purvanga puja, right? What are the items we use in a puja, like flowers, dhupam, deepam, nevedyam, nirajanam, karpura nirajanam, the bell, ghanta, kunkumam, right? Sandalwood, akshatas, and different vessels we use, like the achamana patram, panchapatram. This is what a puja plate looks like, right? With all the different ingredients. And then there are the actual pujas themselves. So because most of our children can't read any script other than English, we use English. The manual is written in English, but you will see that it is got diacritic marks. So when you see ring the bell chanting, iti ghanta nadam kritva, right? So if I just put A, you don't know if it is kritva or kritva. So I put a dash on top of the A. These diacritic marks help our children pronounce it correctly. Lakshmi, you want to talk? So that's just different examples. This is Pancha Upachara Puja, the simplest puja you can do with 5 offerings. And we talk about what is the meaning of 5, the significance of these 5, right? They are mapped to the 5 elements and the 5 sense organs. So, yeah, a lot of information about puja. And a simple puja for Ganapati. Ganapati Pancha Upachara Puja. How will you do a puja to Ganapati using this? Then the next higher or more complex level of puja is 16 Upacharas. Shodasha Upachara Puja. And so it gets into this Shodasha Upachara Puja. And how do you do Shodasha Upachara Puja to Ganapati? All of this is beautifully compiled, illustrated by our own youth volunteers. So it is a labor of love that they do every year. And after Shodasha Upachara Puja, we have a Shodasha Upachara Puja for Saraswati, because she is the goddess of learning. And I think in the Parikramam, we are taking Saraswati around. So every year they decide which deity goes around the temple. And this year it is Saraswati. So there is a Shodasha Upachara Puja for Saraswati that is in this manual. And after that, we have, of course, other topics. So this topic is myths and stories. And we cover some of the stories from our 9 Mars. So Chandikeshwara 9 Mar is covered.
So these are saints from South India and Karaikal Ammayar, right? Every year it's a different selection of saints, but the main one is on Aurobindo and Mother. Anybody been to Pondicherry here? Aurobindo Ashram? You have been, Amma? No? I see one hand, a couple of hands. Yes. So we try to introduce children to the stories of different saints. As you know, in India and Sri Lanka, South Asia, so many different saints have come and gone, and they have all had their own very specific interpretations of Sanatana Dharma. So last year we did Neem Karoli Baba. He was a Babaji from the north of India, and this year it is Aurobindo and Mother from Pondicherry. So their life is described, and there will be a series of talks that explains some stories from their life in a child-appropriate manner. Obviously, there is a lot of high philosophy here, which we cannot. It's not appropriate for children, but we will explain it in terms that children can understand. And then after that, we have Shiva Puranam chanting, which you might have heard today when the kalashams were lifted and carried around the temple. And we have some stories of Manikavasagar, who is the composer of Shiva Puranam. Then we have devotional singing, Panchapuranam, that is Tevaram and so on, the Tirumurais. Those are covered. And we have bhajans, which are in other languages, right? Different bhajans. There is a temple bhajan tradition called mantra bhajans, where we introduce mantras into the bhajans, and that tradition is taught here. And after that, we have this parikramam class, which is how do you put together parikramam? You want to talk? Come. Thank you. Thank you, Sri Jana. So I am one of many of those who are involved, a part of the VSI team. My name is Laksananna, or they'll learn to call me Laksananna, okay? So namaskaram, first and foremost. Now, the question as to what this camp answers is that of tradition and culture. Many of you who may have come from Sri Lanka, from India, though one of the biggest mistakes that we have made as a culture is asking the question as to why. Why do we do this? Why do we go in front of Ganapati and do we do Topakaranams? Why is it that we offer Ganapati Arampullu? Can I ask any of you who are here, how many of you are coming from Toronto? Can I have a raise of hands? All of you are coming from Toronto, okay? So let me ask you a question. When you come to this temple, what is it that is most unique about this temple versus any of the ones that you go to in Toronto? Anyone? And you can answer my question. Put your hand up and answer. Go ahead, Amma. Her answer was, you can go up and touch the Devi. And that is spot on. In this temple, you can go absolutely as close to the Murti as possible. And you can do what? You can do Abhishekam, you can touch the Murti, you can interact with the Devi one-on-one. And when you come to this temple, the first question today that we asked our counselors was, why is it, or what is it that brings you to this temple? Why do you come to this temple, right? A lot of our counselors are coming from Toronto. We even have a counselor that flies all the way from Denmark to be here. So we ask, what is it that brings you here? And the answer was very simple. And I want all of you to try this today. When you go in front of the Devi, look at her eyes. Look, just look. And you will notice that she is alive and well. And you will notice that her eyes will move as the Deepa moves. That is one of the biggest reasons that they come to this temple. You will feel her presence everywhere inside this temple, inside this environment. And so these kids that come, that stay the entire week, not only are they learning, what is Shiva Puranam? Who are the Nayanmar? Can any of you answer me? Which of the Nayanmar here are seated, or are on their butt?
The rest are standing up. Can any of you answer me which one of these 73 are seated? Everyone else is standing. There's only one person that is sat. Can anyone answer me that? Karekal Ammayar. Why is Karekal Ammayar the only one sitting? Anyone? Why is she the only one sat amongst all the other Nayanmar who are on their feet? Why? When she went to Kailash, she noticed and she felt that underneath there were Shivalingams. And so what did she do? My feet will not be on top of a Shivalingam. So she put her hands, and on her hands went all the way up to Kailash. And there Shiva said what? Amma, sit. These are the stories that these kids will learn. Why is that important? Faith, bhakti, bhavam. These are the core concepts of Sanatana Dharma. These are the things that they will learn. We should not allow our traditions, our knowledge to be watered down. It should be carried, passed on, brighter than ever to the generations that come. That is this temple's mission. Okay? And if you all are here beyond 1:30, at around 4 o'clock, we will have the opening ceremony there. We invite all of you to come and witness what it is that VSI is about, what it is that this temple is bringing about. It's super important, and it's super important not just to me as the generation that is coming up, but it's important to the generation that comes well beyond me. My kids' kids, they have to learn. They have to learn why is a Homagundam important. They have to learn what is the Devi. If I was to go and ask one of our kids today, what is it? Why do you offer flowers to the Murti? Why do you show a Deepam? Why do you give Naivedyam? They won't give you a proper answer. So, it is our mission and our understanding that that knowledge has to be passed on. It should not be watered down. Any questions? Because I know I spoke a little bit. Any questions on your end to me? Feel free. Anyone? So Uncle's question is it only in person or is there an online component as well? I'll give you a hybrid Sambar Sadam answer. So the camp is in person. 7 days in person. They are completely taken care of. They have 3 meals a day, 2 snacks a day, 5 times. So they're fed fully. And on top of that, we also have medical staff on site 24/7 the entire time. We have doctors, nurses. Now, in regards to any learning initiatives, we also have those that are online. See, if you want to learn to chant Sri Suktam, or you want to learn to chant or sing the Shiva Puranam, and what does the Shiva Puranam mean? Or even the Lalita Sahasranamam. There are so many 27 levels beyond the Sahasranamam. So each of those meanings, everything is online. You can ask any one of our bookstore staff and they'll point you in the right direction. Any other questions? Okay, so if you have any questions beyond this, a lot of us are at the bookstore. You can find me at the cabin. Any one of us, any one of our volunteers. So one other thing that I wanted to touch upon is the meaning of a lamp. Does anyone know, just as a general question, why is it that we bring a lamp? What is the significance of a lamp? Knowledge? Sure. Anyone else? In the Lalita Sahasranamam, Ajnanta Dvanta Deepika is the name. Anyone know that name? That name, now I want you all to imagine. You go into a dark cave. There is no light in this room. But the second you introduce a lamp into that room, what happens? The darkness begins to dissipate. What is left is that light. If you were serious in your upasana, your sadhana, that means every day you get up, you do Lalita Sahasranamam, or you do whatever it is, Venkata Suprabhadam. Whatever sadhana that you have, if you are serious, at one point, if you look at that lamp, just above, floating on top of that lamp, you will see Mahalakshmi sat there. That is why they ask you to put kungumam on either side of the lamp. See? Small things, but these are things that we should not let go of. We should keep this bit of knowledge. Okay? Small tidbits. All right, so I'll pass it back on.
if you have any questions, any concerns about VSI, please find me or any of us that are inside the cabin, okay? I think we'll continue with a few more announcements, just a few more minutes until Naivedyam is going to be ready. Thank you. Sorry, one more quick announcement. Now, the land that you see around you, I want to talk about a few things. Those of you who have come to the temple for the first time, take a look at the land. There's a lot of land. All the way down there, beyond the river, there's a Banalingam, this big, from the ground up. Okay? Then, if you look off to the right here, there's another Banalingam, this big. Whenever a saint has worshipped a Banalingam in the past, they will leave a stamp. The stamp will give us an identity and a clue as to who may have worshipped that Shivalingam. Has anyone heard of Parashurama? That Shivalingam, if you go and look carefully, you will see the stamp of an axe. That was the mark of Parashurama. That means that Shivalingam was worshipped by Parashurama. So he has been named Parashurama Lingam. Now, if you go a little bit more to the right, we have a building. That is our library. It doesn't hold just a few bit of books. Anything that you may have a question about in regards to Sanatana Dharma and more, we have there. So, if you are ever so curious, I ask you today from 3 o'clock to 5 o'clock, the library is open. You can come into the library and you can look, reference and research anything that you want, any sort of question that you may have. Why do we use a right-handed shankam? Why don't we use a left-handed shankam? What is the difference? What is the difference between a shankam that is found in the Indian Ocean versus another ocean? All of these questions can be answered and the answers are in the library. Okay? So, take your time. Between 3 and 5, you can come to the library. Okay, I believe the Naivedyam is going in now. I'll ask everyone to wait. Let the Naivedyam go first. Keep seated. 1 second. All right. First timers, followed by sponsors, and then everyone else. ತಪ್ಪು ನಾನು ತಗೊಂಡು
Shanti. Devata Everybody, can you please sit down there? Wherever you stand, please sit down. Please sit down. Please sit down. Everyone, please. Sarvamang Mangle Sharane Trambake Devi Narayani Namostute Sarvamangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Hare
Rohara. Rohara. Ya Devi Sarva Bhuteshu Matrurupena Samstita. Namaste, 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 namo. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samstita. Namaste, namaste, namaste. Sri Vidya Hari Rohar. Om Rajadi Rajaya Prasaya Saine Namo Bhayamai Shavana Kurmahe Namo Kaman Kama Kama Himayam Kame Shri Shavana Vedahari Shubhe Raya Vai Shavanaya Maharajaya Namaha Sarva Mangala Mangalye Shubhe Sarvartha Sadhike Sharanai Prabhache Narayani Namostute Sri Guru Hari Om. Mahesh Madhava Vidha Srinamata Skandanandi Indramani Chandra Kubera Agastya Kodavuttarika Vidyatmike Kalyana Tattvatra Shiva Shivambike Paripurna Brahma Shakte Maha Tripura Sundari Tava Sri Padukam Pujayami Tarpiyami Namaha Nirmalya Devatabhyo Namaha Nandikesharabhyo Namaha Om Tatpurushaaya Vidmahe Chakratundaya Dhimahi Tanno Nandi Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Parvara Saudo Mahapojram Sartantvartena Prashinchami. Om Om Pranaya Swaha Pranaya Swaha Pranaya Swaha Udanaya Swaha Samasa Swaha Madhe Madhe Amritapani Amrita Vidamsi Uttara Poshan Kalpyami Hasto Prakshyayami Pado Pralandosha Kalpyami Namaha Tatpurushaya Vidmahe Chakratundaya Dhimahi Tanno Nandi Prachodayat. Can reduce the volume a little bit. Number 9 mic. Om Rajadirajaya Prasaya Saine Namo Vayamayi Shavadaya Kurvahe Saveta Bhanta Makamahimayam Shavanadar Udaya Vaishvanaya Maharajaya Namaha Ananda Nirajanam Darshayami Namaha Rohara Raktajwala Jatadaram Srimalam Raktangatejomayam Dratva Shulapashakapardamarkam Lokasya Rakshakaram Nirvanam Sunadahanam Punayanam Ananda Kolahalam Vande Sarvabhuta Pishakanata Badakam Kshetrasya Padam Shivanam Om Suvanadujaya Vidmahe Trishulahastaya Dhimi Tanno Bhairava Prachodayat.
Say Yarama, can you just move? To move away from here. Om Kamakshi Namaha Kanakatatingi Namaha Ratnatatingi Namaha Mangalya Bijavai Mai Namaha Markadaratnai Namaha Padakaya Namaha Padakaya Namaha Kanakachintai Namaha Dhyana Pitanilaya Namaha Padmasanastai Namaha Pancha Pushpa Bhanastai Namaha Shukastai Namaha Ankushastai Namaha Navaratnamauli Namaha Chandrasekhara Namaha Pashastai Namaha Vikshudandadavastai Namaha Kamakotinilayaya Namaha Durvasarashi Pujitai Namaha Kamakshi 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 Namaha. Namaha. Everybody knows his mantras, can chant along with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Tvameva Madasya Pita Tvameva, Tvameva Bandhu Sakha Tvameva, Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Aim Hrim Srim Kurukulaha Kurukula Asraim Askalarim Asato Mahapadmanantaste Karnanda Balimandane Sarvabhutedanata Parameshwari Pati Setu Kurukula Deva Vayami Dhyayami Sampurami Namaha. Om Aim Hrim Srim Om Hamsa Shiva Soham Hamsaha Asakafrem Asakshamalavariyum Asom Sahakshamalarim Sauh Sarupa Nirupanahetabe Suguruve Sri Jnanambika Sameta Sri Chaitanyananda Sri Guru Sri Padakam Pujam Tarpiyanaha. Om Aim Hrim Srim Itipali Dravyaya Namaha. Om Aim Hrim Srim Kurukulaya Kurukule Rima Sarvashmana Rim Swa Kurukulaya Swaha Kurukula Shadevarin Mama Sarvadevebhyo Sarvaganebhyo Sarvayuganebhyo Vignakartabhyo Bhutavampat Bhanamudram Avakune Mudram Kamadhenu Mudram Sarvayoni Mudram Namaskar Mudram Padasya. Om Aim Hrim Srim. Can you put on Nadaswaram here, somebody? Om Tatsalan Shodayet Sri Guru Sarvakana Bhuta Shakti Varahi Pitra Devata Kurukula Bali Devata Mata Purushanta Sagara.
Chakra Priya Bindu Tarpana Para Kavarna Vividha Karayaka Chidru Chaitanyatmaka Chakra Rajanilayam Chakranga Sancharini Bhava Bhava Vidharini Bhavaparam Advastu Chintamani Ishagrat Para Yoga Brahma Vidisham Swananda Bhutam Param Pashantu Dharmadhyamanilasini Atma Atma Vicharini Varadam Vidyam Tribhujatmikam Vichakra Priya Bindu Tarpana Param Ya Divya Shiva Keshava Adi Janani Ya Jaganmohini Ya Brahma Iti Nikanta Jagata Mandaita Kandayini Ya Pancha Pranavadre Panadini Ya Chittala Malini Chapayat Paradevata Bhagavati Sri Rajarajeswari Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Rohar. All of you please stand up. Yani Papan Yadmaja Tani Tani Pranash Padakshana Pade Pade Papoham Papa Karma